Welcome, everyone. So I had shared different prayers, but I don't think we'll take that one today. So I have in front June 3, 1914. Maybe we can take this, and if we have time, we can take June 4th, 1914. Yeah. So if anyone would like to read it out aloud, please do so. Hello, Monica, may I? Yes, please. Okay. Now that the whole being is more and more deeply plunged into material activity, into the physical realization, which includes such a multitude of details to be thought of and regulated, I call to thee, O Lord, so that my consciousness, turned thus outwards, may constantly keep this communion with thee, which is the source of all peace, all strength, all bliss. O my sweet Master, accomplish all the work thyself through this individual being in its integrality, or rather, do not let anything in this individual being forget at any moment that it is only an instrument, an illusion made real for thy intervention in it, and that thou alone art and actest. O the benediction of thy immutable presence. So beautiful. I feel like reading it again and again. If you want, you can read it one more time. If all others permit. Yeah, why not? Now that the whole being is more and more deeply plunged into material activity, into the physical realization, which includes such a multitude of details to be thought of and regulated, I call to thee, O Lord, so that my consciousness, turned thus outwards, may constantly keep this communion with thee, which is the source of all peace, all strength, all bliss. O my sweet Master, accomplish all the work thyself through this individual being in its integrality. Or rather, do not let anything in this individual being forget at any moment that it is only an instrument, an illusion made real for thy intervention in it, and that thou alone art and actest. O the benediction of thy immutable presence. Yeah, thank you. So, yes, if there are any thoughts, any reflections, any lines that you are resonating with, please share. No, yeah, you must have experienced, just came to me that when we visit a different sick culture or, just a different, maybe physical uh, area from what we are used to living with, say from childhood, if I am in a village and now I get a chance to visit.
maybe a different village, or maybe something which is very unique, which is new for me. And there is beauty there, there is a kind of relative perfection there. When we come back home, then we feel like उसका कुछ हम यहाँ पे translate कर पाए. You know, if we saw maybe some greenery there, which was maybe unusual for us to see. And now, if we come back, we want the same greenery here also, where I live. तो उसका कुछ एक अंश जो सुंदर लगा, वो मन करता है कि उसको यहाँ पे भी जहाँ आप यूजुअली रहते हैं, उसको भी सुंदर बनाया जाए, है ना? Right. Maybe we saw a different kind of variety of flowers, and we are used to gardening here. So we would try to bring those seeds and maybe plant them here. So, something like that, that if we see some beauty, harmony, some perfection somewhere, we want to bring it to our usual daily life. Right. है ना? So इस prayer को जब आप पढ़ रहे थे, and I think good that we read 2 times. So that reflection it gave to me. कि अब, she has seen some beauty. She has a practical realization of a different beauty, a different bliss, a different perfection. And she's praying that may I be able to translate that into action here in which I am involved. The outward day-to-day activity. And यही गल्फ है जो हम सब ब्रिज, यही गल्फ, या राइट, यही गल्फ है जो हम सब ब्रिज करना चाह रहे हैं. एंड एज दे से इन सावित्री, मदर इज द गोल्डन ब्रिज. Okay. She is the one who helps. We don't have to do so much of labor ourselves. She is the one who will bridge this gulf. So that's what we have to remember whenever we see the bridge, see the gulf that is there, and become frustrated by that gulf, that oh my God, still hanging in here. अभी भी कुछ नहीं हुआ, इतना time हो गया. And at times we find ourselves at the same place again, although we are never at the same place, but similarly, like relative degree. और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वही का वही 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं वही हूँ. So although we are never there exactly, we go in spirals, we are going forward, but still we feel that there is still a lot of gulf that is needing to be bridged in our silent contemplations and in our day-to-day practical outward life. Yeah, so let's go over the prayer and maybe we can take up more reflections. Now that the whole being is more and more deeply plunged into material activity. So, as if things are gathering momentum, Mother is first time in Pondicherry. And in the beginning, you are just like, first 2 days, 3 days, you are just like settling down. And then there comes a time where you are into the activities what are happening there. So you are materially occupied, you are outwardly occupied. Now that the whole being is more and more deeply plunged into material activity, into the physical realization, which includes such a multitude of details to be thought of and regulated. इसका ध्यान रखना है, अच्छा वो भी ठीक होना चाहिए, अच्छा वहां पे ये होना चाहिए, so many things. There are disciples along with Sri Aurobindo. Many things are happening, and I think she was also interacting with people who were close to Sri Aurobindo by this time. And then other activities which maybe we can read in detail somewhere else. So I call to thee, O Lord, so that my consciousness turned thus outward. Now that I have to give it attention, may constantly keep this communion with thee, which is the source of all peace, all strength, all bliss. So this, she has a realization. She has stabilized the realization, a practical, what we can say, many realizations are there, but now it comes to
practically implementation of them. So at times we feel कि वो कहीं टच छूट ना जाए अगर बहुत ज्यादा हम एंगेज हो जाएं. यू नो जो टच हमें सॉलिट्यूड में मिलता है मदर के साथ, वो हमें लगता है कि अच्छा बहुत ज्यादा एंगेज हो जाए तो कहीं छूट ना जाए. लेकिन काफी बार होता है कि एंगेजमेंट इज नेसेसरी, लाइक not out of social pressure, but there are things to be done which are, you can say, divine work. You have to do it. You have to engage in it. अपना silent contemplation फिर वो side में चला जाता है. You don't give it that much of importance. What it importance is the work in front of me, which is more than uh, the requirement of my solitude. तो तब क्या करें? What should be the attitude then? तो ये तो हमारी डे टू डे की भी कहानी है. बट देन आई थिंक पैरेलली हमको ये भी देखना है कि where are we engaged? Are we engaged in things which are just maybe now it's time for us to let go of? We are still pushing ourselves in those engagements. Many a times we do that. So all life is not yoga. This for mothers, because she's engaged in such activities. We can say, as we were reading up with Alokda, that in the beginning there is a phase where you require concentrated effort and you require disengagement from those activities which are not serving the purpose. तो हम इसको गलत जगह नहीं यूज कर सकते, मुझे लगता है ना, कि जो अभी हमको पैटर्न्स छोड़ने हैं, जो एंगेजमेंट सब हमें अपलिफ्ट नहीं कर रही है, वो हमको छोड़नी है. और वहां पे भी हम अपने आप को अगर धक्का मारे जा रहे हैं सोसाइटी के नाम पे, फैमिली के नाम पे, तो वहां हम ये नहीं कह सकते. फिर भी कह सकते हैं एक्चुअली. कहने को तो ये कभी भी कह सकते हैं. ऑलवेज हेल्प. लॉर्ड हेल्प मी, मे बी मे आई बी इन द परफेक्ट एटीट्यूड. तो कहने को कहा जा सकता है, बट वी शुड बी ऑनेस्ट वेयर वी आर यूजिंग इट. Yeah, may constantly keep this communion with thee, which is the source of all peace, all strength, all bliss. So many a times in outward activities, we lose our peace. Yeah, there is a chaos outside. People are not agreeing to each other. So may I not lose that peace that I have found within. Then strength. We keep on constantly disempowering ourselves, by wanting approval or appreciation or a smile or something from the others. In that we disempower ourselves. So may I be connected with that inner strength which doesn't require any approval. And all bliss. And all the time we are running after joy. We run away from things that give us pain and we want joy. So my joy may come from ice cream or, wanting appreciation, maybe getting praise, accolades. So may I be already dipped in that bliss, which I have within me. So that when I'm doing a work, then I'm not seeking it from outside. You know. Then it can become disinterested work. So you are doing it because it is necessary at the moment, right thing to do, but you're not wanting either peace, empowerment, or bliss from that situation. Disinterested. जीवन मुक्ता. कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. That's why mother has exposed these prayers to us. It's not that एक दो लोगों के लिए बना हुआ है. और नॉट ओनली कर सकते हैं, इनफैक्ट व्हाट श्योर बिंदु सेज इज दैट इसके बिना फुलफिलमेंट ही पॉसिबल नहीं है. भागो, मतलब जहाँ भागना है, but even ego's fulfillment is possible only here. Gradually as we reach such a place where these words resonate with us. Yeah, anything? Yeah. तो वो सेंस ऑफ लैक नहीं, देखो आप ये जो लास्ट सेंटेंस है, सेंस ऑफ लैक में ऑपरेशन नहीं हो रहा अब. आई एम नॉट डूइंग अ वर्क सो दैट इट गिव्स मी कंटेंटमेंट. And so if I'm not doing that work, where is my contentment? Oh, I have lost it. That is not what's happening. I'm in communion, even in work, in communion with the source of all peace, all strength, and bliss. Hmm. So it's a state of hopelessness from the material world.
not a state of a negative hopelessness, in the sense I know that the material world cannot give me what I'm looking for, peace, strength, and bliss. So more like an acknowledgement through all our experiences. Yeah, and then that helps us to keep light. बर्डन तो हम इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं जगह जगह से, जो मिलती नहीं है, पूरी नहीं होती, तो अब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मिले तो सही, नहीं मिले तो सही, है ना? Yeah, so yeah, if any reflections are there, please share. This, like, really, if one is ready to open their eyes, this really sheds light on, how we basically operate, right? Like we have been grown up listening to I think, therefore I am. If there is no ambition, that's the end of it. Till you are ambitious, you are alive. These are the phrases or thinking that we have been brought up with, that I must want something with all my heart, and like that fervent thing that burning in the fire, कि उस जितना ज्यादा चाहिए होगा उतना तुम effort डालोगे and stuff. And I think especially after a certain age, one when realizes कि इतना चाहा, इतना मिला, और उसके बाद भी I'm just sitting like that, right, with that begging bowl in general from everyone. And then this is the approach, right? That I am peace, I am strength, I am bliss. And I'm doing this now, right? Like again, like you said, that the result is not in my hand. I'm doing it out of the joy, like win or lose, right? There is this false perception that this would give passivity, right? This would not inspire enough. This would not motivate enough, because we are so used to कि unless there is vibration and shaking and बस तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो कुछ होगा नहीं. And yet this is so powerful. This is, again, this lead, I mean, so much purification and so much faith, so much certitude need to be there for this to even be possible as a, ये भी एक possibility, consideration भी इसको करने के लिए भी, because it seems so opposite to how we mostly approach things, कि ये reason है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. I think Acharya Prashant also, talks about this in lots of ways, like the race was won by the one who did not run, and doing everything from a place of completion. Okay, I'm full and now I want to do this, rather than the lack that you were referring to. I mean, it's a subtle thing. And yes, we miss it. Like we hear it, but then when we are doing things, something, that old pattern is again standing. कि क्यों कर रहा हूँ? क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा. Yeah. Yeah, and I think there must be a time for this thing to happen. So it may not resonate with everyone, these lines that we read. But if we have gone through some experiences and have now some learning through them, then maybe it's time that we go forward. Mm. So there are, this resonates very much with Jivan Mukta, what Sri Aurobindo talks about in Isha Upanishad. He talks about this ideal of a karma yogi, Jivan Mukta. So I'm not sure if we, hmm, okay, maybe we take it later, not just right now. We first take the prayers, the next paragraph, and then we can maybe see if I can find those underlying lines, and then we can see only that part, because we'll get lost. Okay, so the second half.
O my sweet master, accomplish all the work thyself through this individual being in its integrality. Or rather, do not let anything in this individual being forget that at any moment, that it is only an instrument, an illusion made real for thy intervention in it, and that thou alone art and active. This we have to remind because we forget. But we also have to see that before this, mother has already had a realization which practically, that communion with the divine has been made stable. तो हम ये जंप करने की कोशिश करेंगे तो it may lead to a lot of frustration. So if some of us resonate with this, and if we feel the need that no, we are miserable in the brain lodged consciousness, which means when we are dipped in the thoughts and feelings, the usual, which we call very normal for human nature. When we are dipped there, it is suffocating. So if some of us realize it, that when I'm dipped, and those stories have not gone anywhere, like they're all around, scattered. So it's just that my faith in them is reducing, or maybe has completely gone off. ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन कहाँ पे. या ये हो सकता है कि अब फेथ कम होने लग गया, उसको इतना आप तवज्जो नहीं देते, you don't believe those stories and judgments anymore, but they are there, है ना. So I feel it's like, यहाँ पे नीचे थोड़ा दलदल टाइप, दलदल वाली जगह है और आपका सिर्फ नाक वाला पार्ट ऊपर है. So as if you're like this, maybe some animals I have seen do like this, like they're doing like this. उनका सिर्फ नाक वाला पार्ट ऊपर और नीचे बाकी सारा दलदल है. So the moment they dip the nose inside, it's daldal. They're suffocated. It's misery. So they have to keep up, alert and keep up, and they're moving in that daldal. So I felt at times that this is what I have to do. Because the moment the consciousness slackens down, we were reading other day, slackened state of consciousness. Immediately the misery is right here. It has not disappeared. It's not gone. It is here. But the moment I am up, like trying to uplift my consciousness and keeping it with the mother or wherever it feels right, there I'm okay. So stabilizing ourselves in the sense that identifying myself with more and more that state, so that this other state becomes alien to me slowly. That no part of my being connects with this. So when I live more in an uplifted state of consciousness, which has no connection with being immersed in thoughts, feelings, and day-to-day storylines, it's almost like one can say, are you a human being at all? At times you can say that, because what we relate with being human is all the time thinking and judging and commenting and being in emotions, sentimentality. So वो नहीं है ना, वो नहीं है तो ऐसा लग सकता है कि why are you so cold, why are you so indifferent, है ना, ऐसा हो सकता है at times. And Sri Aurobindo says that people who truly are in touch with that true consciousness, or they have touched it with that true love, they may actually feel very indifferent at times to people. Because what we seek is emotional sentimentality, and that is now absent, mostly. Not completely, but just no formula, but it may be there. So excessive emotional sentimentality may not be there, and excessive judgment, excessive commenting upon things will vanish. So one may feel that, and whenever empty pockets of time are there, you are just immersed with the mother. You don't want to indulge in thoughts or feelings. They don't have any meaning for you anymore. So it may seem like a different kind of a life. But first we have to stabilize before I can say that, okay, what I have seen there, this is what I want to put in work.
So you work through me and let me know wherever I am forgetting. Don't let me forget at any time that you are the doer through me, which we forget, है ना, क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है. So taking things quite objectively, one can say, quite objectively. गलती हुई, ठीक कर लेते हैं. हम्म, कुछ और आगे बढ़ना है, अच्छा बढ़ लेते हैं. पीछे जाना है, अच्छा चले जाते हैं. तो डिवाइन वर्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना. कोई मतलब बिन पैंडे का लोटा मान सकते हो एक तरीके से आप. टेढ़ा होना है, टेढ़ा हो लेंगे. अच्छा सीधा रहना है, सीधा रह लेंगे. नो? क्योंकि अब खुद कुछ नहीं चाहिए. व्हाट यू वर शेयरिंग अर्लियर, अब खुद कुछ नहीं चाहिए. जो चाहिए वो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है. ऐसा नहीं है कि भिखमंगे बैठे हैं. ऐसा इनफैक्ट हो ही नहीं सकता है. नो, इफ आई एम नॉट गेटिंग, देन आई कांट बी इन दैट स्टेट. Yeah, so anything here, anyone? This morning I had to do a few extra things at the rate of my sending my kid to school. And I was like, running around between two floors, grabbing this, doing this. And suddenly I felt a sense of accomplishment coming that, see, I am the one who can do this also, this also, this also, this also. And suddenly this flash, like when I had ankle sprain, I was lying down. When I had this issue, I was not able to. So, like, there's something in me which wants to grab onto things and say, I am doing. See, right? And a lot of times after this I comes, then this comes ke the expectation from others around you also then start increasing. If I have done 10 things when I was supposed to do 5, now you better step up your game. This like whole like this you open this path, right? This मतलब door. वही है ना, वो जो the first thought Yeah. that went unnoticed, है ना, Yes. वो एक उसके बाद एक और स्लाइड, एक और स्लाइड, एक और Yeah, स्लाइड. exactly. So as soon as I was feeling a sense of accomplishment, I just paused. I said that the fact that I'm able to stand, climb the stairs up and down, I'm so grateful for that. And I kept it down. But this, false sense of doing से जो एक accomplishment मिलती है, मतलब doing से जो false sense of मैंने किया मिलता है, I could see how it's addictive. I could see how it's trying to grab over and say that I am doing it, kind of a thing. So it's it's like something to be careful about. Like it comes obviously like all things very subtly. And वही जैसे अभी बात ही हो रही है कि let me not forget I'm an instrument, or simply let me not forget that this thing, this health, this ability, this capability is also grace, right? Like there's no me. I mean, if I'm able to do something, that too is a blessing I've received that it's happening through me. For example, like Abhito, I was talking about just, preparing something for the child or giving him, making him ready. But from the smallest to the biggest things, it's a slippery slope to think that I am doing, and it takes that what you were saying, right? A bit thinking, no, matlab, if I have not been given certain conditions, like 10 चीजें मेरे पास अगर ओके नहीं हो तो वो मैं कर ही ना पाऊं, जिस पे मैं खड़े होके कह रही हूँ कि मैंने किया. Like, so good point to catch as soon as you feel. And that is the reason I feel that if we are not doing much, if we have lost a job that we were used to and stuff, or anything that we have been doing that we think we are not doing, it starts giving us a feeling of कि you're not good enough, या कुछ कर ही नहीं रहे. भाई जो movement, जो sunlit path में we read कि mother says कि most of our actions are like we are holding a glass with water and just stirring the spoon and thinking कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. So I think कुछ actually में physically ना secretions like endorphin or something might be getting secreted when you are doing some action, because there is a sense of accomplishment and somehow result में कुछ है ही नहीं. मतलब बस पानी जैसे ही तुमने बंद करा हिलाना वो रुक गया, right? So we don't see the whole picture, just the movement.
gives a I think false sense. I may be allowing the glass, but what gets unnoticed is the thoughts that are parallelly running along with the hilaing of the glass. तो आप देखो ना, एक मास्टर भी गिलास हिला सकता है और मैं भी गिलास हिला सकती हूँ। उस मास्टर को कोई एंट्री नहीं हुई इस चीज की कि मैं कर रहा हूँ, बट मेरा वो जो पैरेलल कमेंट्री है जिसके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, दैट इज क्रिएटिंग द मिजरी ऑफ मी बीइंग अ डूअर। वो अननोटिस चली जाती है क्योंकि वो तो दिखती नहीं है ना, मतलब आउटवर्डली तो एक्शन सेम है, मास्टर भी वही हिला रहा है, आप भी वही हिला रहे हो, बट आपके मन में जो कहानी है वो वहां पे नहीं है ना। और इवन व्हाट यू वर शेयरिंग, अगर लॉजिकली भी इस चीज का डीप रूटेड एनालिसिस किया जाए, एक्चुअली में इट विल रिंग ट्रू that without the causes and conditions I have no capacity। कौन कितने देर से आप लोगों के लिए दुआ कर रहा है। देयर वाज अ somebody had sent me this share कि आज बड़ी अच्छी तबीयत लग रही है, क्या किसी ने शायद दुआ करी है मेरे लिए, समथिंग लाइक दैट, It's and we very have no beautiful. clue। sorry, yeah, Yeah, it's a very beautiful शेर है, पूरी 4 लाइनों का। शेर है, हाँ हाँ हाँ। तो हमें पता भी नहीं है कि हम आज रिलेटिवली ठीक ठाक कंडीशन में क्यों हैं। तो वहीं पे मुंह बंद कर देना चाहिए अपना। और पैरेलली स्पीकिंग, मान लो अब मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वीगन हूँ, इसलिए मेरी अच्छी हेल्थ है। तो अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लो, क्या सारे के सारे वीगन लोग हेल्दी ऐसे होते हैं, है ना। ये तो इसलिए है क्योंकि ना मैं बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। क्या सारे के सारे लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन है हेल्दी है? नहीं। और सेल्फ डिसिप्लिन भी, एनर्जी अगर नहीं हो आपके अंदर एक दिन, क्या कहाँ गया सारा सेल्फ डिसिप्लिन, भाड़ में चला जाता है। And we have no clue what you are sharing, really we don't know। so making the best possible utilization of the right now, which is to come back to the present moment, go down and do what is right। best is, I think, that you have to remember that whatever we are doing, it's not me but mother. Like in one of the mother was training some physical exercise, weight lifting का जो होता है वो उठा रहे थे, और वो एक लिमिट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम इसको ये सोच के उठाओ कि इसे मैं उठा रही हूँ, तुम नहीं उठा रहे हो, मैं उठा रही हूँ। और जब ये सोच के उठाया तो उसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया और उससे ज्यादा किया। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि समटाइम व्हेन यू फील कि एनर्जी नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये सोचो कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, मदर की फोर्स कर रही है। वो चाहे ब्रश करना है, चाहे नहाते समय नहाना है, थकान होने लगती है, कुछ करने लगती है, द मोमेंट यू थिंक कि इट इज नॉट यू यू आर डूइंग, इट इज मदर फोर्स, देन अ काइंड ऑफ अश्योरेंस इज देयर कि हाँ ठीक है, आज पैर में दर्द है, आज बॉडी में पेन है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो बॉडी में पेन है ये हम कर रहे हैं, वो ठीक भी होगा, एंड यू आर नॉट डूइंग, मदर विल डू। तो वो पेन भी कहीं चला जाता है और वो आप काम भी करने लगते हो। तो जो सारी बात है वो यही है कि हर समय ये याद रखना कॉन्स्टेंटली कि ये मैं नहीं तुम, मैं नहीं तुम। I think one of the qualities of mother, one of the 12 qualities जो outer petals में है ना, राइट, तो उसमें I think there are these 3 qualities which are reflective of our, what should be our attitude towards the divine। तो उसमें one of the 3 qualities is humility along with gratitude। The one is humility, to know that we are nothing without the divine। यस। और जैसे हीलिंग में भी, इंटीग्रल हीलिंग में भी मदर शी शेयर्स दैट आप प्रे कर रहे होते हो, मदर मुझे ठीक कर दो, मदर मुझे ठीक कर दो,
फिर कुछ ना कुछ आप ट्राई करते हो चीजें, फिर किसी से आपका ठीक हो जाते हो। फिर देन यू फॉरगेट कि आपने पे किया था। फिर आप क्या दावा किसको देते हो कि इस दवाई ने मेरे को ठीक किया। So mother says that we forget that it is grace that worked through, even through that medicine, whatever. Without grace, no medicine can work. तो वो क्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर सबको बताते हैं, देखो मैंने ना ये दवाई ली थी और आप भी ये दवाई लीजिए क्योंकि ये दवाई काम करती है। एंड इट्स वेरी वेल नोन फैक्ट कि वही दवाई सबके लिए काम नहीं करेगी। कर भी जाएगी कुछ कुछ लोगों के लिए, बट even if it's working, it's grace that is working through the दवाई। And that's why she shares कि जिसमें faith है वहां के उसकी तरफ जाओ। So in her I think correspondence with Nirodha, many a time she shared कि अच्छा उसको उस पे faith है कि वो सर्जरी से ठीक हो जाएगा, so okay let them go to that person। तो जहाँ पे faith है, so because she says that it's faith that cures। If I have faith on homeopathy, I take it with faith and it cures। Yeah, yes, sir. Yeah, I think two things. One, there's some story about, I think, a Sufi saint, and he goes to a clinic and he sees like a line of say hundreds patients outside, and the क्या बोलते हैं डॉक्टर को हिंदी में, चिकित्सक। हाँ बट कोई और आई थिंक सूफी वर्ड ही था जो स्टोरी में, बट वही जो चिकित्सक थे ही वाज सिटिंग, तो द सूफी हाकिम से हाकिम है ना, हाकिम हकीम, बोलते हैं। हकीम, हाकिम नहीं, हाकिम इज रूलर। हकीम हकीम हकीम। हकीम इज, हाकिम इज सो रूलर। थैंक यू। So the Sufi saint comes and he starts laughing. So जो हकीम थे, he was also spiritually inclined and he came and he sat down and said, please tell me why you're laughing, because it was very unlike the Sufi saint to just, do ha 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 kind. So he said, I'm laughing at, this joke that is happening here. Like when I look at the eyes, look in the eyes of the patients, तो उनकी आंखों में ये भ्रम है कि तुम उसको ठीक कर रहे हो, कि यू एज अ डॉक्टर वुड क्योर देम, और तुम्हारे अंदर ये भ्रम है कि तुम उसको ठीक कर रहे हो। और ठीक मतलब ना तो, हाउ डू यू क्योर, यू डोंट नो, हाउ डू दे गेट क्योर, दे डोंट नो। एंड येट ये जो भरोसा है एक दूसरे पे वो इतना वो है, तो इस भरोसे को देख के मैं हंस रहा हूँ कि कौन सी पावर कैसे जा रही है और किसको लग रहा है कि मैं, तो इट वाज लाइक, आई डिडंट से इट नाइसली, इट वाज नरेटेड वेरी ब्यूटीफुली। And the other thing that was coming to me was that once, along with my friend who was struggling a lot, in a lot of court cases, lot of issues, I had met Acharya ji, Acharya Prashant, and he said something which stayed with me. He said that right now you've been brought up in a good family. You are educated, you have rights, you know your rights, and you are fighting and different battles, and you're struggling and you're sad about it. So imagine that, say, if you were born in a village with no rights and the same thing would have been happening to you, you would not even have been able to raise your finger. So the fact that you can fight, the fact that you can struggle, don't you see that so much grace in that too? But we forget. We said, why is God so, cruel to us? Why is this happening to me? But I don't see. So I was repeating myself, but I thought it was a very, very important thing that he made me aware of that day कि है ना, स्ट्रगल भी कितनी वो है मेरे में ब्लेसिंग कि मैं स्ट्रगल की कैपेबिलिटी रखता हूँ। आई थिंक हमारी आदत जैसे फिसलने की होती है ना, तो बार बार फिसल फिसल के हम वहीं पहुंच जाते हैं कि क्या नहीं है, जो है वो दिखता ही नहीं है, और वही मिजरी क्रिएट करता है कि जो है वही कितना ज्यादा है। क्योंकि कंपैरिजन सामने होता रहता है ना, हम्म उसको उसको इतना मिल गया, उसने ये सेम एफर्ट मैंने भी किया था, वो उसको ये पोस्ट मिल गई और वो इतना ऊंचा कर रहा है और फिर उसका नाम हो रहा है,
हम तो दोनों इक्वल एबिलिटी के थे, हम तो यहाँ पर हैं, फिर उसका गॉड फादर है, फिर वो पूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरी वो चैन, और उसमें हम कब सारी एनर्जी ड्रेन हो गई वो पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि दूसरों की जो लाइफ का हम हमारे दिमाग में इमेजेस होती हैं, उन पे क्योंकि हम अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को इतना टाइटली बिलीव करते हैं, तो जो दूसरों की लाइफ के बारे में हमारी जजमेंट्स होती हैं उनको भी बहुत टाइटली हम बिलीव करते हैं कि नहीं, जो हम दूसरे की लाइफ में सोच के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, यही तो है उसकी लाइफ, तो वो क्यों नहीं है मेरे पास जो उसके पास है। क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शंस हैं अपनी लाइफ को लेके, उसकी लाइफ को लेके, और आपने दोनों परसेप्शंस को ट्रू माना हुआ है। अब लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा वो है, अनएथिकल है कि उसके साथ ये हो गया और मेरे साथ ये, तो सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स अगेन, their some relationship issues and everything, looking at other people's life, कि उसके पास तो कंपेनियनशिप है, पार्टनर है, मेरे पास ही क्यों नहीं है। भैया तुमने उनकी लाइफ में जाके देखा किस टाइप की ऊपर ऊपर से हाथ, देयर वर पीपल हियर इन माय कम्युनिटी, हाथ पकड़ के आप एक दूसरे का चल रहे हो, और दूसरों को अगर देखो तो इमेज बड़ी अच्छी आ रही है कि देखो क्या बनती है इनकी। इन 7 days you get to know that those people are separated. Now what would you make out of it? है ना। तो आई एम नॉट सेइंग सेपरेशन इज वेरी गुड इफ वन इज नहीं नहीं, मूविंग इन हाँ। डिफरेंट डायरेक्शंस, बट आई एम नॉट सेइंग दैट not going there, but how my images really cloud my perception, and we keep on believing in our images. I think this is one practice, very subtle practice that we have to cultivate, and I'm sure we are doing that. That whenever any image about my own self, any situation, or any person, कि ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका तो ये होने वाला है, we keep on thinking, we don't even realize, we have to immediately notice it and drop it. They are not truth, they are not truth, they take me away from truth. They create unnecessarily drainage in my mind, and then I have no energy left for true things to do in my life. And then whatever time is left, when I'm not draining myself in these storylines, I stay with the divine consciousness. Just blankly staying with like an open receptacle we had talked like last time, वो लोटा है जो हर जगह जा जाके खुल जाता है, उस लोटे को बस एक जगह खोल दो और टिका दो बस। या एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। और ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए, एक उम्र बीतने के बाद भी नहीं समझ में आए, तो वो ये बहुत ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। experience, I think we all have experiences राइट, that make us sure and convinced that no, this is the right way to go. एंड दिस इज ऑल्सो आई थिंक ग्रेस। एक वो है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर आपकी बुद्धि में ये बात आ गई है तो ये भी ग्रेस है। ये आपकी कोई थिंकिंग नहीं है कि आप बहुत बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो आपकी लाइफ शांत है, और सामने वाला देखो वो इतनी उम्र की होकर अभी भी इसी फ्रस्ट्रेशन में है कि उसकी फोटो बिल्कुल ज्यादा आ गई। आई नो, तो वो ये एक्चुअली वो ये कि कंपैरिजन भी। सामने वाले पे हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वी हैव नो हाँ, आइडिया व्हाट हाँ, एवरीबॉडीज लाइफ इज फॉलोइंग अ डिफरेंट ट्रेल, वी हैव नो आइडिया ऑफ दैट राइट। ट्रेल। है ना, एक जगह एक्सीडेंट हुआ, एक जना मरा, हाँ, किसी बंदे ने उसको मारा, कोई एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ तो किसी ने तो टक्कर मारी होगी। अब हमें मतलब थिंग्स आर मिस्टिफाइड इन सच अ बिग मैनर दैट इसका भी एक पर्पस होगा और इसका भी एक पर्पस होगा। और जो बाई स्टैंडर्ड है उनमें से भी उनके लाइफ में कोई ना कोई अनफोल्डिंग चल रही होगी, उनके लिए भी कोई एक लर्निंग होगी कि हाँ मुझे ये देखना था, आई टू गो थ्रू इट। तो इतनी सारी चीजें इंटेंगल्ड हैं बैक टू बैक कि वही वाली बात है, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो भैया रहने दो, गलत जगह दिमाग ना डालो। राइट। एक क्वेश्चन है जो इसी संदर्भ में आ रहा है। हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं, जो जो चारों तरफ हो रहा है, जो न्यूज है, अब वो धरने पे बैठे हैं, कौन सच है कौन गलत है। तो वो एक जो चीज है, कौन सच है कौन गलत है, कैसे जाने कैसे जाने। और वो दिमाग में इतना ज्यादा उसका इफेक्ट हो जाता है
कि लगता है कि ये इसको भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सेंसिटिव, यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। सच और गलत का पता लगा। इसका भी एक बहुत बड़ा बोझ होता है दिमाग में। अब आप देखो ना, मतलब मदर और शिरोबिंदु आके दे लेफ्ट द फिजिकल बॉडीज, है ना। ये चीज तो उन्होंने भी देखी थी, हाँ, है इसीलिए ना, मैं, जो हाँ, बोझ। इसीलिए ये अब क्वेश्चन मैं आ तो रहा कोई था। परमात्मा हूं नहीं कि मेरे ऊपर ही बोझ है, उन्होंने भी बोझ देखा होगा तभी उन्होंने काम किया जो करना था। हाँ 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 तो हाँ। अब वो जो सजेस्ट करके गए हैं काम, मुझे कोई याद नहीं है ऐसी कोई मतलब मुझे अभी तक कोई लेटर याद नहीं है मदर का, हो सकता है हो, वेयर मदर हैज सेड दैट लुक एट आउटर सिचुएशन एंड उसका बोझ ले लो, डेफिनेटली नॉट, मदर तो है कभी ना। भी नहीं कहेंगे। हाँ है ही हाँ। नहीं, मतलब मैंने अभी तक नहीं पढ़ा ऐसा कोई लेटर। नहीं नहीं नहीं। मतलब हो भी सकता है, हो कभी बोला हो मदर ने कि देखो बाहर क्या हो रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता। मतलब आई नो दैट श्री अरबिंदो यूज्ड टू read many papers and used to be in touch with what, and but that was for a reason which he was, ही वॉज डूइंग designated for साधना that फॉर reason, दैट। हाँ। है ना। मतलब मेरा वहां पे नहीं है, मेरा मतलब आई जस्ट गेट एंटेंगल्ड देयर। अब ये भी तो देखो जा कौन रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, श्री अरबिंदो या मैं, है ना। श्री अरबिंदो जा रहे हैं उसको सुलझाने के लिए, मैं जाती हूँ, मैं खुद ही मतलब बेहोश होकर बाहर निकलती हूँ। तो क्यों जाऊं मैं गलत जगह, क्यों जाऊं। वही बात हो गई ना कि यू, अभी टाइम है मेरा कंसंट्रेट करने का, इन गैदर करने करने का। का, सैपलिंग को प्रोटेक्ट रखने का। और मैं कह रही हूँ देखो संसार में कितना कुछ चल रहा है, डाल दिया उसको सैपलिंग, बेचारी भ्रष्ट हो गई, फिर से उगाओ, है ना। तो आई थिंक एंड टू ईच हिज ओन, बिकॉज वी कांट से दिस टू एनी पर्सन, है ना। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफरेंट पाथ्स आर देयर। आपकी क्या जर्नी है, किसकी क्या जर्नी है, बट आई थिंक देर इज स्टिल वी रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग टाइम that we become stabilized so much in that inner communion with the divine that these outer events then stop to shake us, but we can intervene and do something about it. तो अगर वो स्टेट अभी नहीं आई है, तो अभी मेरा काम है अभी इन गैदर करना और उस स्टेबिलिटी को पक्का करना, मेंटेन my करना। identification with divine consciousness, not remaining in the ego consciousness. वो समझ में आता है, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो वो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको लोअर ही करता है। बिल्कुल। क्योंकि तो उसको शट कर देना ही सबसे अच्छा होता है। और आप देखो ना, मतलब ये न्यूज भी जो है, मतलब अगेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर सेवरल डिफरेंट रीजंस, वी हैव नो क्लू ऑफ, हाँ बिल्कुल। है ना। प्लस जो न्यूज आती है वो मुझे लगता है, आई फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट न्यूज जो है, इट्स अ बायस्ड न्यूज, इट्स मोर लाइक आपको वही मसाला दिया जाता है जो सोसाइटी मसाला मांगती है। अच्छी चीजें एब्सोल्युटली। भी तो हो रही हैं। अब यहाँ पे श्री एब्सोल्युटली। अरबिंदो आश्रम है, दिल्ली ब्रांच, दे आर डूइंग सो मेनी गुड एक्टिविटीज, वो तो नहीं आता न्यूज में, है ना। इतने सारे ऑर्फन्स, इतने सारे बच्चे जो वहीं पे पले हैं, बड़े हैं, वहीं एजुकेशन हुई है उनकी, वो तो नहीं आया, मैंने कभी न्यूज में नहीं पढ़ा। तो क्या मतलब वो होता ही नहीं है ना। तो इट्स अ डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन ना, वो भी हमको देखना है। आज गली में किसी ने किसी की हेल्प करी, वो आया न्यूज में। किसी ने कोई चीज चुरा ली और फिर वापस कर दी, क्या वो आया न्यूज में? नहीं आया ना। तो वो कितनी सारी चीजें नहीं आई, आया वही जो जिसके वो जो हमारा जो गंदा चिपचिपापन है ना, जो वो चाहता है, मसाला चाहता है, वो मिलता है फिर टीवी पे। सनसनीखेज खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। और वो किस तरह से बोली जाती है, किस तरह से उसकी हाँ, स्टाइल या होती है, और सारे या चैनल में। या a time comes when you cannot stand that thing on you, you can't डेफिनेटली stand. डेफिनेट, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। वो सबसे ज्यादा बंद करना ही सबसे, तो वो हाँ, लगातार लगा के देखने का कोई मतलब नहीं होता है हाँ। एक और ही अगर चीज को। चेंजेस करने भी हैं, मतलब what you हम्म were talking of, so many changes are required in the community, आप अपने बगल से तो शुरू करो, है ना। हम्म क्या हमारी कम्युनिटी में कचरा सॉर्ट होता है? नहीं होता तो मुहिम करो, खड़े हो जाओ कि भैया कचरा सॉर्ट करेंगे, है ना। क्या हमारी कम्युनिटी में वट एवर पीपल आर फॉलोइंग सर्टन रूल्स रेगुलेशंस विच आर गुड फॉर ईच वन ऑफ अस? नो, तो फिर उसके लिए स्टैंड लो। क्या पेपर रिसाइकिल होता है? अच्छा नहीं होता, उसके लिए stand। तो करने को अगर करना चाहें तो अपनी ही
बगल से शुरू करना चाहिए, विच इज मोर अप्रोचेबल, राइट। है ना। वर्ल्ड की बात करने लगेंगे कि वहां इतना कुछ हो रहा है इजराइल में या जहाँ पे, है ना, वहां कर क्या पाओगे तुम? प्रे कर पाओगे? अच्छा प्रे करो, बट वरी तो किसी काम की नहीं है ना। और उसमें वो भी रह जाता है जो कर पाते हैं, वरी करते करते ओ देखो संसार में कितना कुछ हो रहा है। बातें करने में बड़े मजे आते हैं। और जो कर पाते हैं, जहाँ एक्शन जरूरी है, उधर तो अभी बातें करके आ गए ग्रुप में कि अरे संसार में बड़ा कुछ हो रहा है। इधर आपके घर पे आया कि भैया कचरा सॉर्ट नहीं हो रहा, अरे यार एनर्जी अभी है नहीं है, चाय पिलाना जरा, तो आप में एनर्जी नहीं बची, इसको अटेंड करने की आपके पास एनर्जी नहीं है। सारी वाइटल एनर्जी जो एंथुजियाज्म था वो वहां लूज करके आ गए, तो घर पे बिल्कुल खाली। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। These are very relevant examples. वो जो कहाँ कहाँ हम फिसल सकते हैं, ये वो है। कहाँ कहाँ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिसलना, ये वो जगह है फिसलने वाली जहाँ हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है, ग्रेस है, कि पता चलता है। जैसे एक दो के बाद लगा कि अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करो ये, इसको कोई ये मतलब नहीं, जितना जानने भर का था उतना बस जान लिया बस। Yeah. जैसे आलोकदा, आई थिंक वन ऑफ हिज टॉक्स ही वाज शेयरिंग दैट if I think during the time of COVID, when people are full कोविड। of fear, and there he was sharing that if a contagion can be of a virus or germ or a disease, then there can also be a contagion of faith. राइट। Faith is contagious. हाँ। So when you go, wherever you go, whomever you interact with, you spread that faith as you spread cold and common cold and other infections. So beautiful, है ना, तो एब्सोल्युटली। ये भी करा जा सकता है। कि लोग मतलब इंस्पिरेशन लें कि यार मेरा फेथ डामाडोल हो रहा था तो मुझे उसकी बात याद आ गई कि ऐसा होना चाहिए फेथ, है ना। तो that's also we can do. Why to spread things which we can't do much about. हाँ जी, तो लास्ट कमेंट कीजिए, फिर आई थिंक खत्म करते हैं इसको आज। एक्चुअली आई हैव thought I'll just pull it out, जीवन मुक्ता वाला, बट मे बी किसी और दिन ले लेंगे। इट्स देयर इन ईशा उपनिषद। So यू गॉट इट? yeah, I got it in Isha Upanishad. There is I can share on with what page one can find it if you have the book, or I can send the PDF. Just a second. इट वुड बी ऑन इनकार्नेट वर्ड। हाँ, इनकारनेट वर्ड में तो मिलेगा ही आपको। ये तो मेरे पास PDF है एक ईशा उपनिषद वाला। आई डोंट नो हाउ फ्रेश दिस वर्जन इज, बट मे बी क्वाइट ओल्ड। तो यहाँ पे ईशा वास्तु उपनिषद पार्ट 2 में पेज, इसमें तो इस PDF में पेज नंबर 119 है। इससे पहले भी चल रहा है जीवन मुक्ता, इसके बाद भी चल रहा है, बट दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द स्टूडेंट आस्क्ड, will then the Jivan Mukta actually wish to live 100 years as the Shruti says? Can one who is Mukt have a desire? So then he talks about it. Beautiful. So, but requires a longer time. So, taking it. But people who want to study, they can study. If you type Jivan Mukta, JIVAN, without space Mukta, MUKTA. So then you will find these references on Incarnate Word. So he shares that it is possible to live in desirelessness. Not only possible, but there lies our true fulfillment. That work is possible without desire. Engagement in the world is possible without desire. क्योंकि उसको अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो material world, that he is not looking for anything. Okay, so we can end here then, if not anything. Maybe taking one last moment in silence, sharing and dedicating the merit.